अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, नवाज़-ए-उर्दू यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम जनवरी 6 2022 के साइंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स। Assertion A, a horseshoe magnet is a very strong magnet. The poles of horseshoe magnet are very close to each other. Both A and are correct and R is the correct explanation of A. तो यहाँ पर option number 2 is the right answer. Next question. The purpose of streamlining of the body of a ship is to reduce fluid drag. तो option number 1 यहाँ पर सही है. Next question. The following steps are involved in a dairy plant to prepare clarified butter or ghee. तो डायरी प्लांट में बटर और घी का प्रोसेस कैसा करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करना है. इसके अंदर कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है उसको देखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेप्स आर फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस. मिल्क इज पास्चराइज्ड. मिल्क इज पास्चराइज्ड. तो यहाँ पर इज अ फिजिकल चेंज एंड इसमें फिजिकल चेंजेस कौन कौन से दिखेंगे. देन मिल्क इज सेट इनटू कर्ड, ये है ना केमिकल चेंज. तो फर्स्ट फिजिकल चेंज देखेंगे. ए फिजिकल चेंज, कर्ड इज चर्न इन सेंट्रीफ्यूगेट टू सेपरेट बटर. ए भी क्या है, फिजिकल चेंज. एंड फिल्टर्ड एंड पैक. ए सी ई एंड आर द फिजिकल चेंज. तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है. बी एंड डी आर chemical changes. The milk is set into curd. Butter is heated to get clarified butter or ghee. Next question. Polymer A used as padding in the packaging material for delicate items. Delicate packaging के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉलिस्टरीन यूज करते हैं. तो यहाँ पर ये क्या है, पॉलिस्टरीन है, इसमें है ऑप्शन 1. नेक्स्ट, यूज्ड एज एन ऑटोमर आउटर इंसुलेशन लेयर फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स. तो इलेक्ट्रिकल वायर्स में हम पीवीसी यूज करते हैं. पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स. तो बेकलाइट इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में यूज करते हैं. यूज्ड इन मेकिंग बॉटल्स इन पॉलिस्टर. तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Radhika connects a series arrangement of two identical cells with a series arrangement of two bulbs. Which should she do to make the bulb grow dimmer? तो बल्ब को डिम करने के लिए इन्हें क्या करती है, रिप्लेस वन सेल विद अ पीस ऑफ मेटल वायर. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही सही है. रिप्लेस वन सेल विद अ पीस ऑफ मेटल वायर. एक सेल को एक धातु की तार के टुकड़े से बदलना चाहिए. से क्या होता है, bulb grow dimmer होता है. A is used in making bread and other bakery products and the process involved is called. हम ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स में क्या यूज करते हैं, ईस्ट को यूज करते हैं. ये क्या है, यहाँ पर ईस्ट है. तो ये कैसा फॉर्मेशन होता है, उसको क्या कहते हैं हम, फर्मेंटेशन कहते हैं. तो यहाँ पर ईस्ट है और फर्मेंटेशन ऑप्शन नंबर 3 में भी और ऑप्शन नंबर 4 में भी है. तो देखिए नेक्स्ट, is break down sugar into alcohol. The yeast क्या है, शुगर इंटू अल्कोहल में कन्वर्ट होता है. तो हमें क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मास. The sea forms bubbles end of increasing. It's the A, B, C, D and E. A, B, C, D and E. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो बबल्स एंड ऑफ इंक्रीजिंग ई. तो एरोबिक रेस्पिरेशन ए बी सी डी एंड रिस्पेक्टिवली आर मास इस ई. तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है. बबल्स एंड ऑफ इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू नॉट मास. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है. मास नहीं, आई एम सॉरी, उसका वैल्यू इंक्रीज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The phase of moon as we see from the earth are due to changing the relative position of the sun, the earth and the moon. Which of the following statement is true? On a full moon day, the earth comes between the sun and the moon.
relative position of sun, the earth and the moon, which of the following statement is true? यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको हमें चूज करना है. On a full moon day, the earth comes between the sun and the moon. जब full moon day, तो full moon day पूनम की रात होती है तो क्या होता है? The earth comes between the sun and the moon. On a new moon day, the moon in between the earth and the sun. जब अमावस होती है तो the moon day. A and B are the correct option. Option number 1 is the right. Next question. Which of the following represent correct matching set of a part of human eye and its function? Cornea. Cornea ये क्या करता है? Helps in focusing light and protects eye. Iris control the amount of light entering eye. Pupil क्या करता है? Pupil light enters eye through it. Pupil से light enter करती है. और retina acts as a screen of the image. Ciliary muscles क्या करते हैं? Host the lens in option. तो option number 2 यहाँ पर सही है. Next question. Read the following statement and choose the correct option. Suggestion A. The leaves of carrot plants has reticulate venation. Plants having tap roots have leaves with reticulate venation. S1 is correct. Plants having fibrous roots have leaves with reticulate. S2 wrong. There is no relation between type of roots and venation in leaves. तो यहाँ पर A and S1 are true. S1 supports A. Option number 1 यहाँ पर सही है. S1 supports A. S2 यहाँ पर नहीं सपोर्ट करता है. S3. Next question. Which of the following statements are true in the context of fertilization and pollination in plants? Ovary of the flower matures into fruit. Fertilization of and pollination में क्या होता है? Ovary of flower matures into fruit. Ovary क्या बनता है? वो fruit में convert होता है. Fertilization takes place in the ovules. Seeds of the plant from the ovules for fertilization. ये नहीं है. Pollination takes place after fertilization. ये भी wrong है. In pollination, seeds are dispersed by wind, water, birds and insect. ये भी सही है. Fertilization takes place in the ovules. तो यहाँ पर option number 1 is the right answer. A and E. Read the following statement and choose the correct option. Suggestion A. White blood cells help in fighting with disease-causing organisms. A white blood cell can change shape. Both A and are correct and R is the correct explanation of A. Next question. The following table given below mass of value 3 immiscible liquids X, Y, Z, 4, 8, 6 and value 1, 10, 3. Equal quantities of liquids are poured in a test tube containing 5 ml of water. What will be the order of liquids settled from top to bottom? Consider density of water. Y water ZX. ZX. हमारे यहाँ पर सही है. Question. When you increase the loudness of the ringtone of your mobile, the frequency of ringtone. तो loudness of
लाउडनेस हम इंक्रीज कर देते हैं तो मोबाइल फोन का, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिंगटोन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमाइन सेम। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। The frequency of ringtone remains same. Which of the following statement is not true regarding the modes of transfer of heat? Convection takes place in liquids and gases only. Radiation cannot take place in gases. Not true. तो यहाँ पर ये ऑप्शन नॉट ट्रू है, रेडिएशन टेक्स प्लेस इन गैसेस। नंबर 2 यहाँ पर नॉट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, metal X displaces Y and metal Z from their respective salt solution. Metal Y displaces metal W from its salt solution, but Z does not displace W from its salt solution. The most and least reactive metals respectively are. The most reactive metals respectively are X and Z. Next question. Identify the following: a non-metallic lubricant, a metal which does not react with water but reacts with steam, a metal which is constituent of baking powder, a non-metal used in the firecrackers. A non-metal lubricant किसे कहते हैं हम? Non-metal lubricant phosphorus को कहते हैं। और metal which does not react with water but reacts with steam वो zinc है। Metal which is constituent of baking soda, baking powder, that is sodium. A non-metal used in firecrackers is the sulfur. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. Next question. A is called master gland. Who is the master gland? Pituitary. Pituitary is the master gland and is controlled the secretion of hormones. Yes. From B, C, thyroid, adrenal glands. B, C, ovaries and testes, thyroid, adrenal glands. A also secretes. D, A, pituitary gland secrete what? Growth hormones whose production increases in adolescence. ग्रोथ की प्रोडक्शन कब ज़्यादा होती है? एडोलेसेंस में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर पिट्यूटरी, ओवरी, टेस्टिस किस में है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true regarding fungal? They are plants. Fungi are plants. They cannot perform photosynthesis. S. All fungi are unicellular. Wrong. Some fungi helps in producing antibiotics. Option number 2 is the right answer. Reena is suffering from vomiting and lack of appetite. Doctor diagnoses it as viral disease caused due to contamination of water. Reena is suffering from. तो रीना को कौन सा डिसीज हुआ है यहाँ पर? हेपेटाइटिस हुआ। नेक्स्ट, soil A has low water holding capacity and high petroleum rate. Low water holding capacity किसमें होती है? सैंड में होती है। The organic matter level in the soil. So, soil B has high water holding capacity. High water holding capacity किसमें? Clay में। So, precaution, it has high amount of organic matter. Soil C has medium water capacity. तो सिल्ट में, तो यहाँ पर ए बी सी, सैंड, क्ले एंड सिल्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following aligns the most with the inquiry based approach of teaching, learning and science? Student carrying out the activities as prescribed in the textbook. It is wrong. ये यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। स्टूडेंट सिटिंग इन ग्रुप्स एंड प्लानिंग एन इन्वेस्टिगेशन टुगेदर, तो ये पॉजिटिव लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिए, टीचर डेमोन्स्ट्रेटिंग वेरियस साइंटिफिक प्रिंसिपल थ्रू टॉयज। टीचर डेमोन्स्ट्रेट करने से नहीं बनता। टीचर असाइनिंग इनोवेट एक्टिविटीज एज होमवर्क, स्टूडेंट होमवर्क, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A teacher takes her class 6 student to a nearby garden and asks them to look at various plants and fill the following table by ticking appropriate column. Shorter than me. Plant name Tulsi. Question. Shorter than me. तो ये क्या है? Tulsi. Much taller than me. Slightly taller than me. ये क्या वहां पर? Observing. Be hypothesizing. Which of the following skill would this activity require? Observing, hypothesizing, classifying. तो यहाँ पर observing है और classifying है. A and C. तो option number 3 is the right answer. Next question. Which of the following does not match with the equitable use of ICT in science pedagogy? Encouraging the use of free and open source software for creating digital teaching learning environment like the virtual labs. Ensuring the availability of appropriate multimedia software in English and other Indian languages. Encouraging teachers to be users rather than developers of technology. Ensuring digital access for all sections of society. तो यहाँ पर नॉट मैच विद द इक्विटेबल ऑफ आईसीटी इन साइंस कौन सा यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर मैच कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following best describes the meaning of process validity of a science curriculum? Students should be given the opportunity to engage with the ways in which scientific knowledge gets constructed. जब बच्चों को एंगेज करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है. तो यहाँ पर पॉजिटिविटी देखकर मार्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. स्टूडेंट मस्ट बी मेड फैमिलियर विद द रोल ऑफ वेरियस बॉडीज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस करिकुलम. द स्कूल साइंस करिकुलम मस्ट पास थ्रू a specified sequence steps in order to validate. पास करने के लिए नहीं होता है. करिकुलम कंटेंट मस्ट बी करेक्ट एंड फ्री फ्रॉम एरर्स. तो वैलिडिटी ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी. तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is in agreement with our contemporary understanding of assessment in science at upper primary stage? Contemporary understanding assessment. The merit ordering of students should be introduced to encourage healthy competition. Merit सिर्फ merit student के लिए नहीं है. Annual examination should be given much more weightage. Annual examination purpose नहीं. The periodic test should have both a written and experimental component. तो ये यहाँ पर सही. Next question. Which of the following is not aligned with the recommendation of NCF 2005 regarding science question education at upper primary stage? Experiments should be avoided as they are difficult to conduct at this stage. Upper primary stage. Experiments should be avoided. Not elegant. यहाँ पर ये wrong बताए. Not elegant with the recommended. Data collection. say there should be an emphasis on the process skill of science, practical knowledge about. Students should be engaged in data collection from easily available sources. There should be an emphasis on the process skills of science. Practical knowledge about local specific technologies should be included. Next question. Which of the following is not in consonance with the recommendation of NEP 2020 in respect of science pedagogy? Bilingual textbooks and teaching learning material to be used. Experience of occasional crafts to be first introduced at SR secondary level. Curriculum to be rooted in local context. Scientific temper and evidence-based thinking to be encouraged. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 से experience of vocational crafts to be first introduced at SR secondary level. Not in consonance बोला है. The next question. Which of the following is
episodes best illustrate the tentative nature of science? A teacher asking students to share their experiences with different kinds of material which they come across in their daily lives. A teacher holding a classroom discussion about the limitation of various conceptualization of structure of atom like Thomson plum pudding model, Rutherford atomic model. एपिसोड बेस्ट टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। थॉम निम्नलिखित प्रसंगों में से कौन सा विज्ञान की अस्थायी प्रकृति को उजागर करने के लिए सर्वोत्तम है? थॉमसन के प्लॉफ पुडिंग मॉडल और रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जैसी परमाणु की संरचना की विभिन्न अवधारणाओं की सीमाओं पर शिक्षक कक्षा में चर्चा कर रहा है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He noticed that the presence of this mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this mold, penicillin was prepared. Which of the following understanding about development of scientific knowledge is conveyed in this paragraph? Science proceeds systematically according to predetermined steps. Science requires careful observation. तो यहाँ पर only B is the right one. इन सबको देखने पर हम कंक्लूजन ले सकते हैं? Science requires careful observation. Next. A teacher gave the example of human circulatory system to explain the concept of closed electric circuit to her student. She compares the heart to battery and flow of blood to flow of electric current. Which pedagogic devices she using? She using analogical design. तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 7 का है। Which of the following is a pair of kharif crops? Kharif crops: wheat, mustard, paddy, maize, peas. तो kharif crops कौन से है? Paddy और maize are the kharif crops. Next question. The table below matches 3 human diseases with their causative microorganism and mode of transmission. Some entries in the table have been marked as X, Y, Z. टाइफॉइड बैक्टीरिया, टाइफॉइड कैसे आता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर। नेक्स्ट, मीसल्स कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस, तो ये किससे आता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। डेंगू, दिस इज आल्सो वायरस, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन मस्किटो, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Read the following statement carefully and choose the correct option. Assertion A. Mercury is used in thermometer. S. Mercury is a good conductor of heat. Mercury expands uniformly when heated. So R2 is correct explanation for A. Mercury expands uniformly when heated. Mercury is used in thermometer. ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 is the right answer. Read the statement below. All protozoans are unicellular. All bacteria are unicellular. All fungi are unicellular. No. A and B is the right. Correct यहाँ पर क्या है? A and B. Next question. The radii of two metallic balls A and B are in the ratio 3:1. In their density are in the ratio 1:1. What will be the ratio of the mass of A and B? तो यहाँ पर
Ratio of the mass is 9:1. A sample of water has a boiling point of 96 degrees Celsius. Which of the following inference could explain the observation? There are some impurities present in the sample. The sample taken is of seawater. Water is being boiled at high altitude. Water is being boiled at high altitude. So यहाँ पर only C is the right answer. So option number 4 is the right. Next question. Which property of aluminium makes it suitable for making foils for wrapping food? Wrapping food. Aluminium. तो उसके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? It is a malleable. It is highly malleable. Option number 3 is the right answer. Next, which of the following is the correct description of the phenomena of nitrogen fixation plant? Conversion of ammonia into nitrites and then into nitrates. Reducing nitrates present in the soil to release nitrogen gas. Decomposing complex dead organic matter into ammonia. Converting atmospheric nitrogen into oxides of nitrogen. तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Taking milk of magnesia is an effective remedy for acidity. The chemical reaction that takes place in the process is an example of both double displacement and neutralization reaction. और डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the following statement and choose the correct option. Virtual image cannot be obtained on screen. Virtual images are formed at points where the light rays appears to diverge from. Virtual images are always erect. तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1. Both R1 and R2 are correct and R1 provide the correct description for A. Next question. What would be the time period of a simple pendulum if its length is increased 4 times? Becomes twice. Time period में simple pendulum length is increased 4 times. तो यहाँ पर become twice. तो ऑप्शन नंबर 2 सही है. Next question. After fertilization, a zygote will develop into a human male if the sperm had one Y chromosome. After fertilization, a zygote will develop into a human male के लिए Y chromosome में चाहिए. The sperm had one Y chromosome. Option number 2 is the right answer. Next question. Which of the following is the product of anaerobic respiration in our muscles? Lactic acid. Anaerobic respiration. तो मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं तो लैक्टिक एसिड से आते हैं. What happens to the weight of iron nail when it rests? It increases. Next question. An element X reacts with oxygen to produce an oxide whose solution turns red litmus to blue. Which of the following could be X? तो यहाँ पर X क्या है? X यहाँ पर मैग्नीशियम. From the following, identify the pair of organisms which reproduce by binary fission. Binary fission किसमें होता है? Binary fission amoeba में होता है और पैरामीशियम. Pair of organisms reproduced by binary fission, amoeba and paramecium. Next. Which of the following statement is true? All physical changes are reversible, all chemical changes are reversible. तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? Neither A nor B. Neither A nor B. The image formed by a pinhole camera is real. Which of the following properties of light provides the best explanation for this phenomenon? Light travels in a straight line. Number 1 is the right answer. Next question. What would be the effect on the electrical resistance of a wire if its length and the area of cross section are both doubled? Resistance will increase 4 times, resistance will decrease by 4 times, resistance will double, resistance will remain unchanged.
ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। Miss Upasana wants to build students' understanding that air is all around us. Which of the following activity is most aligned with this lesson objective? तो air around us इस टॉपिक को आपको बच्चों को अच्छी तरह से समझाना है कि यहाँ पर वो किस तरह की एक्टिविटी कर सकती है। Defaulting an air-filled balloon using a pen. Option number 1 is the right answer. If a student have just entered grade 8, if students have largely mastered the concept taught till grade 7 as per NCRT, which of the following will they most likely not be able to describe? The functioning of an electric bell, the effect of current on a compass needle, the role of current in inducing chemical changes. Not be able to describe the role of current in inducing chemical changes. Option number 3 यहाँ पर सही है, the role of insulator in a thermoflask. Next question. Miss Anjali wanted to introduce the water cycle by asking students to first conduct an activity at home and then relating that to the concept. Which of the following activities will be most suitable for the purpose? Water cycle के लिए most purpose suitable activity कौन सी है? Keeping utensils filled with water in sunlight for a couple of hours and then observing them. तो बहुत देर हो जाएगा, इसके लिए टाइम लग जाएगा. Collecting the steam of boiling water on a plate with an ice cube over it. तो ये यहाँ पर सही है, बच्चों को नजर भी आता है ना भी होता है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. Which of the following best describes an open-ended question? Do you think the root of a neem tree is edible? Do you think ऐसा पूछने से root of a neem tree is edible? Do you think ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए. What are the characteristics of a sprouted seeds? ये open-ended है. तो option number 2 is the right answer. Next question. Mr. Ashwin wants a student to develop deductive reasoning while teaching the concept of different types of cells. Which of the following activity is most appropriate for the purpose? Asking student to observe various plants and animal cells under a microscope and derive the typical features of each type. Explaining features of animal and plant cell to student and ask them to identify given cell as an animal or plant cell. हाँ, ऐसा करने से बच्चों में क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ये सही है. आस्किंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन डिफरेंट फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाने से क्या होता है? ज्यादा फायदा. तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the most appropriate instructional aid for a teacher to introduce the concept of circular मोशन? सर्कुलर मोशन के लिए यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन कौन सा? ब्लेड्स ऑफ फैन, डोर नॉब, रोप पुल्ली सिस्टम और टॉय कार. तो ब्लेड्स ऑफ फैन यहाँ पर सर्कुलर मोशन के लिए सही है. नेक्स्ट. Which of the following is best suited to be taught using a simulation software? Effect of the force of carom's trigger on various coins present on the board. Simulation software. Option number 1 is the right answer. A hook activity is the one which makes use of student existing knowledge and generate interest. Which of the following is the best hook activity for Miss Soumya to use while starting to introducing lesson on heart? Heart के बारे में बच्चों को पढ़ाना है. Ask student to draw the heart in detail by looking at a diagram and compare it with the simple heart diagram. As kids, ऐसा करने से थोड़ी ना पता चलता है. Simple diagram or deep diagram. As student, if they would be more interested in learning about the heart first or about kidney first. बच्चों को ऐसे पूछने से show a movie.
किस में इंटरेस्टेड हो। तो बच्चों कुछ भी बोल सकते हैं, टीचर को एंगेज करना है, क्लास को, टीचर को स्टार्ट करना चाहिए, टीचर को टॉपिक पढ़ाना। शो अ मूवी क्लिप विथ हार्ट रेट ऑन द मॉनिटर एंड आस्क व्हाट स्ट्रेट लाइन शोज। शो अ मूवी क्लिप दिखाने से heart rate on the monitor and ask what straight line shows. Ask student to vote on which of four given organs is the most important. Ask a few students to explain why. तो ऐसा करने से बच्चों में क्या आता है, इंट्रोडक्टरी लेसन ऑन हार्ट. Ask student to vote on which four given organs is most important. Ask few students to explain. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे लिए कौन सा है, हार्ट, किडनी वगैरह बोलते हैं बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. Renil asked student to research and prepare a short note on the topic aerobic and anaerobic respiration. If at some point of his lesson he wanted to use these submitted assignments as assessment as learning, what would be the most relevant question for him to ask? How did you decide which aspects of aerobic and anaerobic respiration to include in your note? ये सही है. How did you decide which of aerobic and anaerobic respiration to include in your note? Next, the last question. Mr. Mahesh taught the concept of factors affecting combustion. Which one of the following is the best example of an authentic task to assess student on their understanding of factors affecting combustion? Designing an alarm system which can set off before a substance reaches the ignition temperature. Describe how water and air affect combustion. List the substances around you that are inflammable in nature. Create a fire extinguisher using commonly available items. तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक अलार्म प्रणाली तैयार करें जो किसी पदार्थ के प्रज्वलन तापमान तक गर्म होने से पहले बजने लगे. समझाए कि पानी और वायु किस प्रकार दफन को प्रभावित करते हैं. अपने आसपास प्रकृति में मौजूद उन पदार्थों की सूची बनाएं जो ज्वलनशील है. आसानी से उपलब्ध चीजों का प्रयोग करके अग्निशामक यंत्र तैयार करें. तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है. तो आज हम दोनों क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होंगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.